Assalamualaikum everyone, and a very good evening to all of you. I hope you're all doing well. My name is Eeman Ahmad, and I'm a third year medical student here at the FMH College of Medicine and Dentistry. And I'm also one of the core team members at CHSI, which is the Center for Health Sciences Research. So today we're starting with our workshop series, which is basically the second edition of a workshop series. Last year we had rolling workshops going on with CHSR. However, this year we've condensed it into four workshops that are basically directed towards medical students, obviously, and we'll be focusing on the types of research and the types of research articles that medical students, especially at the undergraduate level, can conduct easily and get published easily, right? So today we will be starting with the basic principles of research because we do have a lot of first and second years who are interested in research, and this might be repetitive for a lot of you because this is going to focus on the types of research as our members are going to explain in a bit. But after that, on Sunday, we have a session that is focused on editorials, where we will be joined by Dr. Mariam Tariq Avana, who is an alumnus of FMH, and she is a first-year resident in internal medicine in the US. After that, we have a session focused on case reports, where we will have Dr. Arsalan Nadeem, who is a recent graduate of Allama Iqbal Medical College, and he is the president and founder of the Radiological Student Association of Pakistan. So you can see that we have experts lined up in the future, and you will surely get to learn a lot from them. However, today we will be focusing on the basics, because it is important for all of you to understand the types of research that are conducted around the world and also the types of articles that are published. So, because when you delve deeper into a certain kind of research article or a certain kind of experiment that is conducted, you will come across these terms. And if you are not familiar with them, then it will get overwhelming. So, we're making life easy for you, and we're going to go over all of that. And I should mention that today's session is being led by new members of CHSR who are members of the interim core team, and you will meet them in a while. So I will now hand over the floor to Maria, who is a second year MBBS student here, and she will be going over. She will be basically telling you what the entire session is going to be about. Over to you, Maria. Thank you, Eeman. Assalamu alaikum, everyone. I hope you're doing well. I'm Maria Irfan from second year MBBS here at FMH College of Medicine and Dentistry. And I'll be moderating today's session, which will be about the basic principles of research. We've had quite a lot of requests from first and second year students to hold a session that really delves into the basics of research, because students starting out in research are usually very confused as to where they can start and how to start. And you may have been overwhelmed by terms such as meta-analysis and cross-section studies and case reports being thrown about without having much of an idea as to what they mean. So worry not, because today's session will be focusing on the basics. You will hear about the types of research that are there, what types of research may be suitable for you, and how you can come up with a topic, and basically a complete roadmap to all things research. So the speaker for today's session will be Noor-ul-Ain from second year MBBS. Over to you, Noor. Thank you so much, Maria. Hello, everyone. It's me, Noor-ul-Ain, and I'm here. And a very warm welcome to you all to the introduction of research webinar. I'm so excited to have you all here on board for the exciting journey into the heart of research. Today, we are not only exploring what, but the why and how behind the research as well. So take this series as an adventure in which you keep on hunting different methods. So whether you are a new researcher or you have been doing research, get ready for exploration into the art of research. So let's move towards our first slide. Here. So the topic of our discussion is basic principle of research. So I am a student of second year MBBS, as I have mentioned earlier, and I have been part of Center of Health Research Sciences for like 2 months, and it's been a great journey. So what we will be covering today is introduction to research. We will have a brief look into the topic selection, the type of research, and the importance and benefits of it. Okay. So the first question which comes to our mind is, what is research?
We have heard it before as well. So I would like to ask my participants to write in the chat box what do they think about the research. You have 2 minutes to write. Okay, so let me do the honors. In my opinion, study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusions. This is what we call research. So basically, the research is the creation of new knowledge and use of existing knowledge to generate new concepts. So as I have written here, the terminology research means studious inquiry or examination. So research is defined as the creation of new knowledge, as I have mentioned earlier, or the use of existing material in a new and creative way so as to generate new concepts, methodologies and understandings. So I hope so कि अब आपको समझ आ गई होगी कि what is research. So let's move towards the next slide. Evidence paradox. So the evidence paradox is that average av- average yearly a researcher is writing 4 papers a year. So it has been said that 19,000 RCTs are being published every year. So tens of thousands of other clinical studies are also being published. According to the report in 2023, it is stated that 5.14 million research papers has been published. So this is ये बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि advancement in the field of research is being done very periodically. So we must upgrade our game in this regard. So here, now we are going to discuss types of research. Okay, so I'll briefly go over this flowchart that beautifully explains the different kinds of research. One thing that you will notice here is that research review articles are not mentioned here. That's because they're not a type of original study. The review articles is an entirely different categorization of articles, right? They are categorized as articles. They are categorized as publications. They're actually very important when you look at a hierarchy of the level of evidence that we look at. Systematic review and meta-analysis are at the top of the list, right? And that's we will be going over that hierarchy as well. But anyway, so at the top you see the question, did the researcher assign exposures, right? So for example, let's go with the example of smoking. You're looking at the effect of smoking. So the exposure here is smoking, whether or not the population, whether or not a participant smoke, right? So that's the exposure. So if the researcher assigned the exposure, if the researcher told people to smoke, that's very unethical. By the way, let's look at some other exposure. So let's look at tea drinking, for example. Okay? So if the researcher is asking people to drink tea, that is an experimental study. And if the researcher is looking at people who and asking them if they drink tea or not, that is an observational study, right? So अगर आप if you are looking at a certain population और आप उनसे पूछ रहे हैं आप चाय पीते हैं या आप नहीं पीते, आपने उनको खुद नहीं कहा कि आप चाय पिए, right? So that is an observation study. You're merely observing that population and you are not conducting an experiment of sorts, right? Then let's come to experimental studies. Uske niche, is the allocation random? Obviously, if it is randomized, it would be a randomized control trial. And if it is not randomized, it would be a non-randomized control trial. And what the term controlled here means is that you are comparing the exposure group to a control. That is why it is a controlled trial, if that makes sense. So in this particular case, if we're looking at tea drinking, then the exposure is tea, obviously, and the control is people who do not drink tea, right? I hope that makes sense. If you have any questions, feel free to ask. We will be addressing questions at the end as well, but अगर बीच में किसी का कोई question है, please drop it in the chat box. Okay. Then coming towards observation studies, is there a comparison group, right? If there is no comparison group, it is a descriptive study.
एक्सप्लेन रैंडमाइज टू। अच्छा, सो बेसिकली रैंडमाइज का ये मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक सर्टेन पॉपुलेशन सिलेक्ट किया और 100 पीपल, ठीक है, उसमें से अगर आपका अपना बायस आ जाता है ना, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने जूनियर्स को चाय नहीं पिलानी, मैंने सिर्फ सीनियर्स को पिलानी है, ठीक है, थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स को मैंने चाय पिलानी है, राइट, सो दैट इज नॉट रैंडमाइज। मैं सिर्फ थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स जो कोई भी किसी भी किस्म का बायस आ जाता है ना, दैट इज नॉट रैंडमाइज। या मैं कह देती हूँ कि मैंने सिर्फ फीमेल्स को चाय पिलानी है, मेल्स को नहीं पिलानी, ठीक है, दैट इज अगेन नॉट रैंडमाइज्ड, राइट। सो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ bias that the researcher is introducing by themselves, then that makes the trial not randomized, yes, ठीक है, I hope that makes sense. Okay. And you can, easily, whenever you look at an article, आपको easily समझ आ जाती है whether it's randomized or not randomized. And it's usually mentioned in the article as well. Okay, so coming towards observational studies, is there a comparison group? If there is not a comparison group, it is a descriptive study. We will be looking at different kinds of descriptive studies in the next few slides. उसमें फिर केस रिपोर्ट्स आ जाती हैं, केस स्टडीज आ जाती हैं, जिसमें आप एक ही टाइप का जो है आउटकम देख रहे हो, ठीक है, you are not looking at people who did not have that particular exposure, right? And if there is still a comparison group, then this becomes an analytical study because you are analyzing what effect that particular exposure had, right? And then in analytical studies, we have three different kinds of studies. The first one that we can discuss is cross-sectional studies. Now, this is the, this is one of the types of studies that is conducted by medical students. मतलब बहुत ज़्यादा ये होता है जो आप forms fill out करते हैं ना, usually that are sent in your class groups, etc. Those are usually cross-sectional studies. So what you're looking at is the exposure and the outcome at the same time. So for example, if I'm looking at tea drinking and if I am looking at anxiety, for example, so I'm looking at both of those things together at the same time. I'm asking people to fill out a questionnaire. I'm asking them their tea drinking habits, and then I'm asking them whether they feel anxious, how many, anxiety episodes have they had in the last week or something. For example, ये मेरा था कि मैंने ये देखना है, ठीक है? Yes, it is a snapshot study. It is a snap in just one, it's just one snap in like one time frame, ठीक है, आपने जिस वक्त फॉर्म फिल कराया है, आपने जिस वक्त क्वेश्चनियर फिल कराया है, जिस वक्त आपने देखा है, that is all that you are looking at, like you are not following them बाद में, ठीक है, and that is what the difference is between cross-sectional studies and cohort and case control studies. So looking at cohort studies, these are prospective. That means that you are following up with them. So it starts with exposure and looks forward in time to outcome. What that means is that आपने पूछ लिया कि oh, do you drink tea or not? ठीक है, आपने वो पूछ लिया, and then you are following up with these people and you are looking at how you are looking at whether they develop anxiety or not, right? Like whether they develop a disorder, for example, or how many episodes of anxiety have they had per week, and you are going to obviously compare that with people who do not drink tea, okay? And then looking at it retrospectively, that becomes a case control study. So for example, you look at the data from the psychiatry department. You look at people who have reported to the psychiatry department with episodes, with multiple recurrent episodes of anxiety, right? And then then you follow up with them. Follow up the name. Basically, you look at their data and you see whether they drink tea or not, right? And then you see if there's a positive association or a correlation that is just statistically significant between tea drinking and anxiety, right? I hope that makes sense. And that is it for now. And we will be going deeper into all of these sites of research. And one thing that I want to mention, can you go back, please? Yeah, so one thing I want to mention is that usually as medical students, we can focus on descriptive studies and analytical studies and review articles. Keep that in mind. This is not mentioned in this flowchart. Like in review articles, पे भी focus करना चाहिए. And we don't really have access to RCTs in general. So that's really difficult to do at this level. But yeah, that is it from my side, and you can continue now. The types of research which Eeman discussed, they are epidemiological. ठीक है, अब हम लोग जो टाइप डिस्कस करेंगे वो होगी अकॉर्डिंग टू द जर्नल्स. सो देयर आर सम टाइप्स जो कि आप रिसर्च कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जर्नल. सो द फर्स्ट टाइप इज रिसर्च आर्टिकल. हम लोग एक आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एनी एम्पिरिकल स्टडी. एंड द सेकंड टाइप इज रिव्यू आर्टिकल. अगेन हम लोग किसी भी आर्टिकल का, कोई भी आर्टिकल जो कि प्री एग्जिस्टिंग है, उसको हम लोग ले सकते हैं और उसको रिव्यू कर सकते हैं, जैसे कोई भी लिटरेचर रिव्यू, सिस्टमैटिक रिव्यू. The third type is theoretical article.
Same goes for it. And the fourth type is book review. Like we can read any book on related to research और फिर हम उसका review वगैरह कर सकते हैं. And basically the editorials are written to the जो कि हमारे authors होते हैं उनको हम लोग ये लिखते हैं. अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है टॉपिक सिलेक्शन. ठीक है. टॉपिक सिलेक्शन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप. The first thing which comes to our mind is like choosing your area of interest. We must choose our area of interest. Like जितने भी लोग हैं उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, कोई फर्स्ट ईयर का होगा, कोई सेकंड ईयर का होगा, कोई थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर. सो वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द एमबीबीएस. ठीक है. तो फर्स्ट ईयर वालों ने एनाटमी पढ़ ली होगी, फिजियोलॉजी पढ़ ली होगी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ ली होगी. सेम गोज फॉर द सेकंड ईयर. एंड सिमिलरली फॉर द थर्ड ईयर आप लोगों ने पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी वगैरह पढ़ ली होगी. तो आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू सम एक्सटेंट पता चल चुका होगा कि कौन सा आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. ठीक है. तो choosing your area of interest is basically that whether you want to write on the anatomy of a particular topic or write on the biochemistry or on the physiology of the topic. So the second step is the field you want to pursue in future. ये सबसे ज़्यादा important step है. देखें अगर आप लोग रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो एमएलई है या प्लैब है. ठीक है. अगर आप Okay, I think Noor is having internet issues, but basically what she's trying to emphasize on is the fact that you need to know what your एक area research of already की हुई interest है is. gastroenterology. Okay, so Noor has internet issues and she's disconnected. I will continue for now. Just a second. Okay, so I hope my screen is visible. Basically, Noor was telling us about topic selection, right? So there are two phases to selecting a topic for the research that you want to conduct. The first one is broadly selecting an area that you are interested in. And then the second one is refining your topic, right? So especially as first and second year students, and even in third year, you might not know what exactly you're interested in. Noor, are you back? Okay, great. You got cut off at the topic selection slide, so can you please continue from there? Okay, so while Noor is setting up, we do have a question. What are RCDs? Can you explain that? Okay, so for example, you will know you might have heard of the fact that जब COVID की vaccine बनी थी, तो उसके जो trials हुए थे, उसके जो time period था, that was pretty short, right? So that trial is basically a randomized control trial. Some of you might have even received that vaccine as a participant of RCTs that were even conducted in Pakistan. ठीक है. आई रिमेम्बर शफा में लगती थी वैक्सीनेशन, कोविड की वैक्सीन लगती थी और वो ट्रायल चल रहा था. ठीक है. तो उसमें उन्होंने रैंडमाइज किया होता है कि वो किसको दे रहे हैं वैक्सीन, किसको प्लेसीबो दे रहे हैं. ठीक है. सो लाइक इन द सिंपलेस्ट टर्म्स यू हैव एनकाउंटर्ड आरसीटीज अपने लाइक टाइम पीरियड अपने पाकिस्तान में भी. एंड आप सबको लाइक कोविड वैक्सीन का तो पता ही होगा कि आरसीटीज उसकी हुई थी. सो आई होप दैट मेक्स सेंस. Okay, so I think Noor is still not back, so I will continue. Noor, are you back? Okay, great. Can you start with topic selection, choosing your area of interest, because you got cut off there. Sure, Eeman. Can you go back? Yeah, okay, thank you.
सो आई वाज टेलिंग कि आप हमेशा वो टॉपिक चूज करें जो कि आपके फ्यूचर में आप परस्यू करने वाले हैं, नॉट लाइक कि आप लोग कोई और फील्ड में रिसर्च कर लें एंड जाके अप्लाई किसी और फील्ड में कर लें. द सेकंड थिंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू मस्ट हैव अ मेंटोर. जैसे आई वाज टॉकिंग अबाउट एफएमएच के वी हैव अ फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट सर डॉक्टर हमाद एंड ही इज लुकिंग आफ्टर दिस सीएचएसआर सेंटर ऑफ this CHSR center. So the third step is हमें हमेशा वो फील्ड चूज करनी चाहिए जिसमें एडवांसमेंट्स आर बीइंग मेड एवरी डे. ठीक है. तो मतलब जैसे ऑन्कोलॉजी हो गया, सर्जरी हो गया, कार्डियोलॉजी. इन माय ओपिनियन सबसे ज्यादा जो काम जिस फील्ड में हो रहा है वो कार्डियोलॉजी है. ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अच्छा, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव द प्रोसेस ऑफ टॉपिक सिलेक्शन. सबसे प्राइमरी चीज जो बच्चों फेस करते हैं वो ये होता है कि अब रिसर्च तो करनी है, अब ये नहीं पता होता कि किस टॉपिक पे करनी है या हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसे है, जो कि मैंने आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपनी पिछले स्लाइड में बता दिया है. अब वी विल बी डिस्कसिंग द प्रोसेस. ठीक है. सो द फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो कि फर्स्ट स्लाइड में मैंने बता दिया. सेकंड वुड बी सिलेक्ट अ डिजीज. ठीक है. एरिया ऑफ इंटरेस्ट हम लोग चूज कर लेते हैं कार्डियोलॉजी. मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, एक कार्डियोलॉजी रिलेटेड कोई भी डिजीज लाइक जो आपके जहन में सबसे पहले आती है वो काइंडली चैट बॉक्स में लिखते हैं. सो आई कैन सी myocardial infarction there. सही है. ठीक है. सो वी आर गोइंग विद दिस वन. We have choose our area of interest, which is cardiology. We have choose our disease, which is myocardial infarction. So the third step would be read up on available treatments. So we have studied कि myocardial infarction के mainly 3 से 4 ट्रीटमेंट होती हैं, जिनमें नंबर 1 पे आता है मॉर्फिन. हम मॉर्फिन का यूज करते हैं जिससे हमारे जो ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज हुआ होता है हार्ट के अंदर वो खत्म हो जाता है. एंड द सेकंड थिंग इज एस्पिरिन. हम एस्पिरिन का यूज करते हैं. एंड द थर्ड थिंग इज बीटा ब्लॉकर्स. ठीक है. तो हमने ये 3 चीज अपनी जो भी इसका ट्रीटमेंट है वो हमने चूज कर लिया. अब हमने क्या करना है कि सिलेक्टेड ट्रीटमेंट करना है. हमने इन 3 ट्रीटमेंट में से कोई एक ट्रीटमेंट सेलेक्ट करना है जिसपे हम अपना रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं. ठीक है. तो अगेन मैं आप लोग को टाइम दूंगी, आप लोग चैट बॉक्स में जाके लिखें कि आप लोग बीटा ब्लॉकर्स, मॉर्फिन, एस्पिरिन में से कौन सा ट्रीटमेंट चूज कर रहे हैं. So some of you are saying morphine, some of you are saying beta blockers. हम लोग एक एस्पिरिन की एग्जांपल से कंटिन्यू करते हैं, एक बीटा ब्लॉकर से. ठीक है. अब जो पांचवा और आखिरी स्टेप है वो हमारा होता है फॉर्मुलेटर रिसर्च क्वेश्चन. ठीक है. अगर हम लोग एस्पिरिन के साथ जा रहे हैं, ठीक है, तो एस्पिरिन का क्वेश्चन हमारे जहन में यही आएगा कि इज एस्पिरिन इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीजेस. ठीक है. अगर हम बीटा ब्लॉकर्स के साथ जा रहे हैं तो बीटा ब्लॉकर्स का हम लोग ये कह सकते हैं कि इज बीटा ब्लॉकर इज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन, जो कि हमें हो जाती है ड्यूरिंग मायोकार्डियल इन्फॉक्शन. सो दिस इज यू गो विद द प्रोसेस ऑफ टॉपिक सिलेक्शन. आप सबसे पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज करेंगे, फिर उसके अलावा फिर उसके बाद आप एक डिजीज चूज करेंगे जिस पे आप बात करना चाहते हैं, जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं. एंड थर्ड स्टेप में आप लोग अवेलेबल ट्रीटमेंट पे उसके जाएंगे. उसके बाद आप लोग एक ट्रीटमेंट चूज करेंगे, क्योंकि एक डिजीज के काफी सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं. आप एक ट्रीटमेंट चूज करेंगे, उसके बाद जो है आप लोग अपना एक रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे. उस रिसर्च क्वेश्चन का आंसर के लिए आप अपना पूरा रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे. So moving towards the next slide. ठीक है. अच्छा, चूजिंग योर टॉपिक में अगेन हमने वही वाली चीज को रिपीट किया हुआ है. इसमें यह है कि हमने स्टार्ट विद ब्रॉड टॉपिक किया है. ठीक है. हमने एक ब्रॉड टॉपिक मतलब आप कोई भी ले लें, बीटा ब्लॉकर का ले लें, किसी का भी ले लें. ठीक है. फिर दूसरा स्टेप हमने ये करना है, उसको नैरो डाउन करना है कि डज बीटा ब्लॉकर ट्रीट हाइपरटेंशन इन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन. इसी तरह जो हमारे सेकंड स्टेप होता है रिफाइनिंग योर टॉपिक. आपने अपना टॉपिक को रिफाइन करना है, उसको ये देखना है कि उसमें एडवांसमेंट जो है वो की जा रही है, उसकी क्लिनिकल रेलिवेंस है, वो नोवेल है, उसमें होमोजेनिटी है. ठीक है.
अच्छा ठीक है, जो टॉपिक सिलेक्शन है ना वो आपका सबसे ज्यादा प्राइमरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है। जो आपके जर्नल्स होते हैं वो हमेशा वही वाला टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जिसमें जो कि ज्यादा रिलेटेबल हो और जिस पे बहुत कम किया जा चुका हो, ठीक है। जो कि आप लोग मतलब जब आप उस पर रिसर्च करें और मतलब एक न्यू रेवलेशन हो आपके लिए। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ये एक दफा रीड कर लेते हैं। यू आर द एडिटर ऑफ एन हाई IF जर्नल एंड यू रिसीव अ पेपर टाइटल स्मोकिंग एज अ रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर, ठीक है। A systematic review and meta-analysis. The search strategy, data analysis, and write-up are all perfect. Would you publish this paper? Please answer in the chat box. Okay, so I would like to comment that when you look at the topic, जो आप टॉपिक पूरा पढ़ते हो तो ऐसे लगता है कि ये तो बहुत अमेजिंग पेपर है, राइट? And as you've mentioned that the search strategy, data analysis, and write-up are all perfect. So if you are an editor of a high impact factor journal, like बहुत अच्छा कोई journal है, आप उसके editor बन गए हो, would you accept this article or not? Make sure that you read the topic. No. The first answer we received is no. Okay. A simple no. जैसे कि Dila, काफी it's आप लोगों written से in the on the slide. You are an editor of a high impact factor journal and you receive a paper titled "Smoking as a Risk Factor for Lung." Oh, it's supposed to be lung cancer. Sorry, a lung cancer, a systematic review and meta-analysis. So as I mentioned earlier, that when we look at the level of evidence value hierarchy, meta systematic reviews and meta-analysis are at the top. So like this is a very good type. This is a very good level of evidence. Would you or would you not publish this art? Would you or would you not accept this particular article? Tell me, Abdullah. No. Okay, why not? You guys are right, but why not? This Keneko, it's an amazing, it's a very high level of evidence, right? Okay, so Asan says, we all know the correlation of smoking with lung cancer. Countless studies have already been done in it. It probably won't be adding any new information. So that's correct. It's a well-established fact that lung cancer is associated and correlated with smoking, right? Smoking is, like one of the top risk factors for lung cancer. So definitely this is not something that will be published and will not be accepted by a journal. And that is, you guys should understand, and meta-analysis are so hard to conduct. It's very time consuming. It's very overwhelming. सबसे पहले तो topic selection is very overwhelming. Then data extraction and all of that is very overwhelming. The analysis itself is very overwhelming. So if you're spending so much time on conducting a meta-analysis, and make sure that you select a topic that is actually publishable, right? So don't waste your time on topics that are not novel and topics that will, it's basically a huge waste of time, right? So that's the point of emphasizing so much on topic selection. Okay, Noor-ul-Ain, you can continue. ईमान ने बहुत अच्छे से सम अप कर दिया इस वाले क्वेश्चन को। कोई भी जर्नल नहीं चाहेगा कि वो ये वाली स्टेटमेंट के साथ इनको पब्लिश करें, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा कोई यूनिक फैक्टर है ही नहीं जिसकी वजह से वो उसको पब्लिश करेगा। सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, सो दिस इज द पाइको मॉडल। सो पाइको मॉडल इज बीइंग यूज्ड जब भी आपने कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश करना होता है। सो द पाइको प्रोसेस स्टार्ट्स विद अ केस सिनेरियो इन विच अ क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्टेड दैट इज रेलिवेंट टू द केस, ठीक है। इसमें आप कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जो कि केस से रेलिवेंट होगा, और फिर आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से फ्रेस करेंगे कि आपका जो आंसर है उसको वो फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। आप पाइको स्टैंड फॉर P means population, I means intervention, and C means comparison, and O means outcome. अब मैं आगे आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगी ताकि you understand better. So this is example. Sodium glucose co-transporter 2 inhibitor reduces risk of hospitalization for heart failure. So this is a research paper. इसमें से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बताएं मुझे, P stands for population, ठीक है। पॉपुलेशन कोई भी होगी जिसके अंदर वो डिजीज प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये सेकंड वाली स्टेटमेंट में आप मुझे बताएं कि व्हाट इज द पॉपुलेशन।
Yes. So Abdullah Sahil answered heart patient. Yes, you are right. The population in this statement is heart patients. ठीक है. उसके अलावा the second thing is intervention. Intervention क्या होगी आप वो भी बता दें. If you see, intervention is related to drug, surgery, policy or any community program जो कि आप उस disease के treatment के लिए use कर रहे होते हैं. ठीक है. So we got our answer. The intervention is HGLT2. Yes. Saad, you are right. Shazib Ahmad, you are also right. And Abdullah Sohail, you are also right. So the third thing is comparison. हम किन लोगों के साथ या किस चीज के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं इसका. एज यू कैन सी कंपैरिजन हम उन लोगों के साथ करेंगे जो कि जिनमें इंटरवेंशन नहीं है, जो कि कॉमन लोग हैं या जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल ग्रुप बेसिकली आर दोज पीपल जिनको डिजीज नहीं होती है. यस. सो सात आंसर्ड placebo. So basically placebo it is a treatment that has no active properties. ठीक है. हम लोग उन लोगों को देते हैं कोई भी placebo जैसे शुगर पिल होगी या फिर कुछ भी. ठीक है. placebo is used for the clinical trials. ये बेसिकली असल में मेडिसिन नहीं होती है लेकिन बस इनको हम क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए यूज करते हैं. ठीक है. सो व्हाट विल बी द आउटकम. सो द आउटकम इज कि रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा उन लोगों के अंदर. I would like to add कि जो outcome होता है that is pretty easy to identify क्योंकि that is what the question is actually about, right? इसमें हमारे question क्या है कि SGLT2 inhibitors जो है वो reduce कर रहे हैं risk of hospitalization या नहीं. ठीक है. So that is the basic question that we have. तो इससे outcome जो है हमेशा identify करना is very easy. Okay, no, you can continue. I mistakenly said it increases the risk of hospitalization, जबकि it is reduces the risk of hospitalization. अच्छा. Students should mainly focus on three types of researches. ठीक है. उनमें होते हैं reviews, descriptive studies और analytical studies. इस पे हमें इसलिए फोकस करना चाहिए क्योंकि these are the most easiest to do. अच्छा. दिस इज द हायरार्की ऑफ एविडेंस. इट इज बेसिकली अ रैंक मीटर जो कि इट इज यूज्ड टू रैंक द रेलिवेंट स्ट्रेंथ ऑफ रिसर्च ऑब्टेन फ्रॉम एनी मेडिकल रिसर्च. ठीक है. जैसे कि आप लोग हायरार्की ऑफ एविडेंस में देख सकते हैं, सबसे ऊपर हमारे पास है सिस्टेमिक रिव्यूज. सो सिस्टेमिक रिव्यूज आर द मोस्ट ऑथेंटिक टाइप ऑफ रिसर्च. उसके बाद आ जाता है रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज RCTs. So these are after the systemic reviews, and then we have cohort studies. After cohort studies we have case control studies, and after that we have case series reports. हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करने वाले हैं. Okay, so basically review article is also called as literature review. ठीक है. It is a survey of previously published research paper on a specific topic. ठीक है. जो review article होता है ना, it is not an original research. ठीक है. और it will not present new experimental research. ठीक है. So review article is basically not an original research, but it is a survey of previously published research. As it has been written here, it is a summary of previously published article scientific value and relevance. It provides an adequate perception of the text and define further use in academic works. So the next thing is how to write an article review and why do we write it. I would like to ask all of you to write in the chat box कि हमें review article से start क्यों करना चाहिए, हमें क्यों लिखना चाहिए. Obviously, it is easy to do
doesn't require IRB approval. IRB is basically institutional review board, जिसमें basically आपको जाना पड़ता है, फिर आपको इतनी सारी परमिशन लेनी पड़ती है. लेकिन रिव्यू आर्टिकल में आपको क्या होता है, डायरेक्ट जो आपका ऑथर है या जो आपका जर्नल है उनके पास आपको एक ईमेल करनी होती है एंड यू स्टार्ट राइटिंग रिव्यू आर्टिकल. So reason to write में first हम बताएंगे provide a complete foundation on the subject. Second thing is describe the existing status of knowledge. Third thing is point out gaps in existing information for future research. इस पॉइंट को मैं बेसिकली एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि अगर किसी भी राइटर ने कोई रिसर्च पेपर लिखा है, ठीक है, और उसको लिखने के बाद कोई एडवांसमेंट होगी है उसी रिसर्च पेपर में, तो फिर आप लोग क्या करते हो, आप एक आर्टिकल का उसी आर्टिकल का रिव्यू करते हो और उसी में जो नई इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है, जो कि नई साइंटिफिक एडवांसमेंट है, उसको आप ऐड करके एक रिव्यू आर्टिकल लिखते हो. ठीक है. सो द फोर्थ स्टेप इज आइडेंटिफाई फंडामेंटल मेथड एंड रिसर्च अप्रोचेस. ठीक है. इस वाली स्लाइड में बताया गया है कि जो रिसर्च आर्टिकल है वो नॉर्मली होता है 2000 से 3500 वर्ड्स का, लेकिन इट वेरीज फ्रॉम जर्नल टू जर्नल. कुछ जर्नल में इट इज 2500 वर्ड्स, कुछ जर्नल में इट इज 4000 वर्ड्स. सो द सेकंड वन इज ब्रीफ रिपोर्ट. जो ब्रीफ रिपोर्ट है आपकी वो बेसिकली 800 से 1200 वर्ड्स तक होती है. अगेन इट वेरीज फ्रॉम जर्नल टू जर्नल. किसी में 1000 होती है, किसी में 1500 हो सकती है. तो आपको जब भी कोई भी रिव्यू आर्टिकल स्टार्ट करना है तो आपको उसकी ऑथर गाइडलाइन जाके पढ़नी है, और ऑथर गाइडलाइन जो है वो क्लियरली आप गूगल पे लिखोगे आपको वहाँ पे मिल जाएंगी. द थर्ड थिंग इज रिसर्च लेटर. अच्छा, जो रिसर्च लेटर होता है ना, ये सबसे छोटी फॉर्म होती है. ठीक है. लेकिन इसमें इसका इम्पैक्ट भी उतना कम होता है. लेकिन अगेन इट इज़ अ रिसर्च, तो इसके जो वर्ड्स हैं वो 600 से 800 वर्ड्स होते हैं. Okay, so I would also like to point out that there's another type of publication that we haven't really talked about here, that is editorials. And the reason that we are not really talking about that is because we have a session on Sunday that will be focusing on that specifically. And for that session, we will have Dr. Mariam, who has a lot of experience with that. So that is why we are not discussing that, but that is the easiest thing to do. Narrative reviews se bhi easier hota hai to write an LTE. LTE stands for letter to the editor. And also, Noor-ul-Ain mentioned that these are also called literature reviews, but make sure that you do not confuse yourself between the actual process of, like, literature review is synonymously used as a verb and also as a noun. तो verb इसलिए क्योंकि आप literature review किसी भी research करने से पहले आप करते हैं, ठीक है? So it's better to call it a narrative review. Anyway, this is an article, this is a review article that we will be sharing with you. Just a second. Okay, so this is I hope my screen is visible. This is an example of a review article. इसके अंदर, as you can see, सबसे पहली बात तो ये है कि they mentioned this is a narrative review, ठीक है? And when you look at the abstract, you can tell whether it's an original research or not, ठीक है? Whenever you are looking at an article, the first thing that you should do is look at whether there was an intervention that was done by the researchers, or whether or not there are human subjects involved, like directly human subjects involved है या नहीं, उन्होंने खुद से कुछ किया या नहीं, ठीक है? खुद से original research किया या नहीं. That is how you can identify whether it is an original study or whether this is a review article. And then when you look at the review article, they haven't really mentioned any, like statistical analysis in this. So we know that this is not a meta-analysis, okay? Because meta-analysis has numbers and stuff. It's a quantitative analysis. And when you open a review article, basically you'll see there's an introduction, methods you explain करने होते हैं, कहीं दफा नहीं भी करते, ठीक है? Then they're looking at clinical presentation. Basically, each narrative review or each narrative review article will have its own headings, but सब में जो common होगा वो होगा introduction. फिर उसके हिसाब से, like, depending on the topic, you'll have different subtopics in it. And then usually you'll have a section on outcomes and conclusions, and also recommendations for the future. And ethics approval is obviously not applicable here. One thing that I would like to emphasize on again is the fact that for original studies, you need IRB approval. That is because you are directly working with human subjects, whereas for review articles, you do not need IRB approval of any sort.
IRB stands for Institutional Review Board. It is also called ERB in some institutions, that stands for Ethical Review Board. Each university has its own IRB or ERB, and you basically submit a summary of the study that you want to conduct, and then they let you know if you can go ahead with it or not. But that is it for review articles, so you can go ahead. So moving on to systemic review. This is the term जो कि आप सबसे ज़्यादा सुन रहे होंगे during your medical degree. हर बंदा, हर इंसान is doing systemic review and meta analysis, ठीक है? तो systemic reviews, as the name implies, are typically involved in a detailed and comprehensive plan, जिसमें जिसकी जो prior knowledge हमारे present होता है उसके ऊपर हम एक statement बनाते हैं in systemic review. So systemic review की सबसे जो easy definition होगी तो it is a review using systemic method. It answers a defined research question by summarizing evidences. यहाँ पे आप देखते हैं systemic review gathers article using a predefined search strategy. As I have told you earlier, it develops a prior objective criteria to evaluate the quality of studies. It summarizes the quality of the data and the results and generally report on unique condition. कोई भी unique condition होगी, कोई भी हमारा previously existing जो knowledge है उसको हम लोग use करेंगे और एक ऐसा statement बनाएंगे जिसको हम systemic review कहेंगे. Okay, so this is an example of a systematic review. Let's go over it together. Okay, so first thing that you can see is title में ही लिखा हुआ है that it is a systematic review. A systematic review of clinical practice guidelines for infectious and non-infectious conjunctivitis. ठीक है? Okay. So they've mentioned that they conducted their search. They considered articles that were published between 2010 and 2020. Okay, so you can do that for systematic reviews. Again, there's no analysis of sorts, because when you start doing an analysis, that becomes a meta-analysis. A meta-analysis is a step forward from a systematic review. But basically, what the main difference is between narrative reviews and systematic reviews is that usually you have a very strict, inclusion and exclusion criteria in systematic reviews. Because again, like a systematic review can be converted into a meta-analysis very easily, because the only difference is that it has an analysis, it has a statistical and quantitative analysis, whereas there's no quantitative analysis in a systematic review. Okay? So for that reason, I mean, that in itself tells you that there's a very strict exclusion and inclusion criteria in this, whereas in narrative reviews, we don't really follow a very strict criteria. Like we just look up articles, and there's no timeline that we have to follow. There's no strict guidelines as such that need to be adhered to. Okay? Whereas for systematic review and meta-analysis, there are very strict guidelines that you need to adhere to. And that is it for systematic reviews. Eeman has summarized systematic reviews. And let's move towards the meta-analysis. So basically, meta-analysis. These are the statistical analysis of a large collection of analysis results from individual studies for the purpose of integrating the findings. ठीक है? But basically, meta-analysis में again वही होता है, हम systemic review लेते हैं, ठीक है? और उससे एक analysis generate करते हैं, जिसको हम meta-analysis कहते हैं. So the first thing is we do a systematic review, and the second thing is we obtain the primary data if possible. The third step is summarize the data quantitatively. हम उसको quantitatively arrange करते हैं in the form of analysis. So the fourth thing is use to systemically assess the results of previous research to derive the conclusions about the body of research. अगर उसी टॉपिक पे कोई previously research की गई है, हम उसी को arrange करेंगे और एक analysis generate करते हैं, जिसको हम meta analysis कहेंगे. Okay, so now let's look at an example for meta-analysis. Okay, so right off the bat,
you can see in the article, you can see in the title of the article, it says a systematic review and meta-analysis. ठीक है, देखते साथ ही पता चल गया कि ये है, ठीक है. अच्छा, and why is it a systematic review and meta-analysis? Because as I've said time and time again, ये systematic review में जब आप quantitatively assess कर लेते हो या analyze कर लेते हो outcomes को, it becomes a meta-analysis, ठीक है. And one important thing that you should know is the fact that there are a particular set of guidelines called the PRISMA guidelines. You can look that up on the internet if you're interested in meta-analyses, because like we cannot really cover the methods to do a meta-analysis because that's outside of the scope of today's session. Anyway, you look at multiple databases. So they've looked at PubMed, Scopus, आप बहुत सारी databases को देखते हो to ensure that you find all of the evidence, all of the studies that have been done on this particular topic. And they've included RCTs, ठीक है? You can do that. You can include other types of studies as well, published up to February 2023. Now, what that means is that they've included articles, they've included RCTs that have been published from the inception of the database, like जब PubMed start हुआ था, जब भी start हुआ था in 1800 or whatever, जब भी था, तब से लेके February 2023 तक जितनी भी studies हुई हैं, they looked at all of them, ठीक है? They looked at all of them, and उसमें से जो भी whichever studies, whichever RCTs fulfilled their inclusion or exclusion criteria, they included those. So they found, how many RCTs did they find? Yeah, so after the screening, 11 studies मिली थी उनको, ठीक है? क्योंकि आपका inclusion exclusion criteria इतना strict होता है, तो usually you do not have a lot of studies. And then again, you can see that there's some numbers that they've reported. Again, this is a quantitative analysis. That is why you'll have numbers from which you can judge whether or not, you know, this intervention. Yeah, so the intervention is motivational self-care promotion on depressive symptoms. So this particular like number will help you conclude whether or not motivation self-care promotion was, you know, effective for combating depressive symptoms, right, among adults with type 2 diabetes. Okay, so let's do an exercise. Let's see if you guys can answer कि PICO model इसमें किस तरह से follow हो रहा है. What is the population for this meta-analysis? You guys can answer in the chat. Adults, okay. Any other answers? Diabetes, 2 adults, type 2 diabetes, adults with type 2 diabetes, exactly. That is the population. What is the intervention? Yes, the population is diabetic patients, but what is the intervention? इसमें बल्कि लिखा हुआ भी है. Eligible RCTs, motivational talk, yes. Motivational self-care promotion, that is the intervention. And what would be the control? Placebo, okay. What is the placebo here? Because this is not a drug, right? They're not giving you a drug. तो उस तरह से placebo inject तो नहीं करेंगे. No intervention, exactly. But उसमें specify आपने ये करना है कि adults with type 2 diabetes ही हो, ठीक है? So population, because your population was adults with type 2 diabetes, your intervention would be people who have been, you know, who are involved in motivation self-care promotion. And then your control would be adults with type 2 diabetes जिनको हमने इस promotion motivational self care program में enroll नहीं किया, ठीक है? So make sure कि उनको आपकी population को आपने भूलना नहीं है, ठीक है? Control में you can't just include all adults, right? So Saad has summarized it. Yes, adults with type 2 diabetes without the intervention. And what would be the outcome? The outcome would be depressive symptoms, whether or not they've decreased, ठीक है? So that is it for meta-analysis. Am I audible? Okay. So Yes, moving you are. So moving towards the case reports. Case reports are basically any unusual or unique occurrences which we do not normally see in our normal life. Okay?
ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं सम इन द मिलियन पीपल, ठीक है। केस रिपोर्ट्स बेसिकली होते हैं, इसमें डिटेल रिपोर्ट्स आप देते हो सिम्टम्स पे, साइंस पे, डायग्नोसिस पे, ट्रीटमेंट पे, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर द फॉलो अप ऑफ द पेशेंट। सो देयर आर 5 स्टेप्स जो कि हम केस रिपोर्ट्स में यूज़ करते हैं। द फर्स्ट वन इज, हम सबसे पहले इसमें इसके 5 सेक्शन होते हैं, ठीक है। एक एन एक्सट्रैक्ट, एन इंट्रोडक्शन विद लिटरेचर रिव्यू, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ केस रिपोर्ट, अ डिस्क्रिप्शन दैट इंक्लूड्स अ डिटेल एक्सप्लेनेशन of the literature review, and a brief summary of case and conclusion. So this is how we write our case reports. Case reports are basically detailed presentation on a single case, जो कि हम लोग कोई भी यूनिक या न्यू फाइंडिंग होगी हम उसको इसमें एड्रेस करते हैं। सो वी हैव फॉर हेयर, फर्स्ट वन इज प्रीवियस अनडिस्क्राइब डिजीज। कोई भी ऐसी डिजीज हो जो कि कभी भी पहले किसी को ना हुई हो। जैसे आजकल अगर आप लोग देखें तो सर्वाइकल कैंसर पाकिस्तान में कॉमन होता जा रहा है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। इवन जो कोविड था वो भी एक ऐसा था कि मतलब वो बाद में नॉर्मल हो गया था, लेकिन जब इनिशियली वो आया था तो उससे पहले वो कभी भी नहीं हुआ था। सो द सेकंड थिंग इज अनएक्सपेक्टेड लिंक बिटवीन द डिजीजेस। कोई ऐसा जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि माइकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, ठीक है, लेकिन हम साथ साथ देखते हैं कि किडनी फेलियर भी हो गया उसके साथ, तो ये लिंक बिटवीन द टू डिजीजेस। ये तो मैं बहुत से ना कॉमन सी एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन जब हम केस रिपोर्ट सीखते हैं उसमें बहुत ही कोई अनयूजुअल सी एग्जाम्पल होती है। जैसे अगर कोई हमारे किडनी डैमेज हो रहा है, उससे हमारे ब्रेन का इफेक्ट भी हो सकता है। ये आई रेड दिस रिपोर्ट, ये लास्ट ईयर पब्लिश हुई थी। सो द थर्ड थिंग इज अनएक्सपेक्टेड न्यू थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स। कोई ऐसी हमने कोई ऐसी ड्रग जो है उसको इन्वेंट कर लिया है जिससे एक किसी डिजीज का ट्रीटमेंट हो रहा है। सो द फोर्थ वन इज एडवर्स इवेंट। कोई भी ऐसा एडवर्स इवेंट हो रहा है कि मतलब पहले नॉर्मल था, वो ड्रग लेने से कोई भी डिजीज जो है वो और ज्यादा सीरियस होती जा रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं केस रिपोर्ट। मैंने आपको 5 स्टेप्स बता दिए हैं, आप में से कोई समराइज करेगा कि हाउ टू राइट एन केस रिपोर्ट? Okay, so I will summarize it in very simple terms. You can write a case report if you see a patient with a very rare disease, or if you see a patient with not a very rare disease, but if you see them presenting with, a very rare presentation, a very different presentation. Okay, these are the two cases in which you can write a case report. And case report लिखने का तो आप लिख ही सकते हैं, but then again, don't waste your time on things that will not be published. Okay. So what we're telling you here are basically points that you can keep in mind to ensure that whatever you write, whatever you work on is publishable. Okay? So let's look at examples for case reports. Okay, so this is a case report on osteosarcoma, okay, which is a very rare type of malignant tumor. Okay, it's very rare. 0.5% of all malignant tumors are osteosarcoma. Okay, and they're talking about osteosarcoma at a rare location. So what is that location? Mandibular location. Okay, so this is a type of rare disease. Okay, अब rare presentation में इस तरह से आपको again, like there's a rare presentation of large bowel obstruction post hemorrhoidectomy. ठीक है, so that basically emphasizes on the fact कि आप या तो आप कोई बहुत रेयर कंडीशन के बारे में आप केस रिपोर्ट लिख सकते हैं, या आपको कोई बहुत डिफरेंट सी प्रेजेंटेशन हो। इतना रेयर डिजीज नहीं है, इतना रेयर कोई डिसऑर्डर नहीं है, बट उसके बहुत रेयर सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं, बहुत रेयर प्रेजेंटेशन है, कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड लिंक निकल आया है। ठीक है, तो उसके ऊपर यू कैन राइट अ केस रिपोर्ट। नो, यू कैन कंटिन्यू। So the next thing we have is case series. It is a type of descriptive studies. Case series में basically ये होता है कि it is इसमें group of individual patient जो है उनको हम involve करते हैं, उनको हम similar treatment देते हैं। ठीक है, case reports जो हैं इनमें demographic information
प्रेजेंट होती है अबाउट द पेशेंट, उसकी एज के बारे में, उसके जेंडर के बारे में, उसके एथनिक के बारे में। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो केस सीरीज है ना, इट इज़ एन एक्सपीरियंस ग्रुप ऑफ पेशेंट विद सिमिलर डायग्नोसिस। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, केसेस में बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम अ सिंगल और मल्टीपल सोर्सेज, जनरली रिपोर्ट ऑन यूनिक कंडीशंस। तो कोई ऐसी कंडीशन है जो कि पहले नहीं थी लेकिन अचानक से वो आ गई है काफ़ी सारे एक पॉपुलेशन ऑफ पीपल में, तो हम लोग उनके बारे में केस सीरीज लिखेंगे। ये बेसिकली केस रिपोर्ट की ही कंटिन्यूशन होती है, लेकिन इसमें जो हमारे सैंपल साइज है उसको हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जज कर रहे होते हैं। Okay, so let's look at a case series together. This is an example that we found. The difference between a case report and case series is the fact that in a case report you are reporting one patient, okay? You are reporting one case, okay? In case series में सिर्फ ये होता है that you are reporting multiple cases with the same disease or with the same rare presentation, whatever your finding is, ठीक है? So as you can see, they've said we report 6 cases of Cambian neonates. And yeah, that is the only difference between case reports and case series. So here we have cross-sectional study. सबसे ज़्यादा आफ्टर द रिव्यू आर्टिकल आई वुड एम्फसाइज ऑन क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, जो कि हमें स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, ठीक है? सो नाउ विल डिस्कस कि व्हाट इज़ क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ जो है, इट एनालाइजेज डाटा फॉर अ पॉपुलेशन, वेदर इट कैन बी एनी इन्फेक्शन, इट कैन बी एनी डिजीज, इट कैन बी एनी प्रेवलेंस, ठीक है? सो इट इज़ अ डाटा कलेक्टेड एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम. It is an observational design that surveys exposure and disease status at a single point in time. जैसे कि हम लोग एक स्नैपशॉट लेते हैं, मतलब हमने एक स्नैपशॉट लिया और उसमें हम एक पॉइंट इन टाइम में एक जो भी हमारी प्रेवलेंस है उसको हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं. So here we have example. दिस इज द पॉपुलेशन. हम लोग इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि हम एक पॉपुलेशन को इमेजिन कर लेते हैं, जैसे कि हम प्रेवलेंस देख रहे हैं एसोसिएशन ऑफ स्मोकिंग विद डिप्रेशन एपिसोड्स, ठीक है? अब क्या होगा कि ये हमारी पॉपुलेशन, सैंपल पॉपुलेशन को हमने ले लिया एट वन पॉइंट इन टाइम. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से लोग हैं जो कि एक्सपोज हो रहे हैं डिप्रेसिव एपिसोड्स पे और कौन से लोग हैं जो कि एक्सपोज नहीं हो रहे होते हैं. उसके बाद जो है हम अपने पास से एक एस्टिमेट एक्सपोजर बनाते हैं और आउटकम बनाते हैं उस पॉइंट इन टाइम का, ठीक है? अगर हम लोग एक्सपोज पीपल में देखें तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि डेवलप नहीं कर पाते डिप्रेसिव एपिसोड्स, ठीक है, जो कि नॉर्मल होते हैं. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि डेवलप कर लेते हैं डिजीज को. इसी तरह अगर हम लोग नॉट एक्सपोज में देखें ना, तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि नहीं डेवलप करते अगेन, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि डेवलप कर लेते हैं डिजीज को. Okay, so let's look at an example for cross-section studies now. So basically, usually जो research conduct हो रही होती है ना, especially in fourth year in CMED, that is a cross-sectional study. Again, cross-section studies, as we've talked about before, they are a snapshot in one time frame. ठीक है? आपने जिस वक्त questionnaire fill out किया, जिस वक्त आपने interviews conduct किए या जो भी आपका method था, उसी टाइम पे आपने एक्सपोजर का भी पूछा है, उसी टाइम पे आपने आउटकम का भी पूछा है, ठीक है? So this is a cross-sectional study. सबसे पहली बात तो ये कि usually it's mentioned that it's a cross-sectional study. Yeah, so this says the cross-section study with a sample size of 908 patients was conducted, blah, blah, blah. ठीक है? You have one time frame. So their time frame is 12th June 2022 to 29th May 2023. ठीक है? And as you can see, okay, so they've probably used, a questionnaire. Okay, so they've mentioned the extended socio-ecological model, ESEM. बाद में उन्होंने यही लिखा हुआ है कि ये चेक करने के लिए to examine factors associated with cesarean sections and vaginal deliveries among the women in our study population. एक मॉडल उन्होंने usually अपनी methods में लिखा होता है that they've used a questionnaire based on a particular model. It could be based on a model in which they examined factors that were associated with
cesarean section and vaginal deliveries. So basically, outcome kya hai, cesarean sections and vaginal deliveries, and the exposure is whatever factors that they're looking at. Okay, so again, they're looking at the exposure and the outcome at the same time. Okay, फिर उसका analysis होता है, and they see whether or not that exposure is just the correlation between that exposure and that outcome, whether or not that's just statistically significant, and or whether it is by chance. ठीक है, so बहुत simple words में cross section studies are easy to do. The only hard part is data collection. Analysis is usually very easy. ठीक है, is easier compared to other types of studies. And this is the kind of research that you will conduct in fourth year. But because it's so easy, I would highly encourage you guys to work on this. And if you have any ideas, please do reach out. And one important thing, you do need IRB approval for this, because you are working with human subjects. ठीक है, तो आपको ethical review board से approval चाहिए होता है for cross section studies. And that is it. No, you can move on. Next, we have cohort studies. So basically, cohort studies are a type of descriptive studies. They are the longitudinal type of studies in which we follow research participants over a long period of time. अब मैं आप में से किसी से पूछूंगी कि कोई मुझे बताए कि कोहॉर्ट स्टडी में और एक केस रिपोर्ट के अंदर या केस सीरीज के अंदर क्या डिफरेंस होता है. Yes, you are right. So case series are basically descriptive studies जिसमें हम लोग small group of subjects को follow कर रहे होते हैं. लेकिन जो cohort studies होते हैं उसमें हम लोग कर तो small group of subjects को कर रहे होते हैं, लेकिन over a long period of time होता है. ठीक है, तो over a long period of time हम इन patients का जो traits हैं और disease हैं उनको हम लोग look after कर रहे होते हैं. So as it has been written here कि cohort is a defined group of people who share common characteristics or experience with defined period of time, age, occupation, and exposure cohort. Basically, what is the purpose of a cohort study? The aim is to look at how a group of people are exposed to different risk factors, जिससे उनकी lives जो है वो affect हो सकती हैं. So जो cohort studies है वो एक इंसान की जिंदगी को काफ़ी तरीकों से उनको affect कर सकता है, like उनकी health को, उनके social factors वगैरह को. So अगर हम लोग ये example देखें, we have two group of people. ठीक है, एक उनमें स्मोकर्स हैं एंड एक जो कंपैरिजन ग्रुप है वो नॉन स्मोकर्स है. ठीक है, हमारे जो ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट है वो स्मोकर्स है एंड द कंपैरिजन ग्रुप इज नॉन स्मोकर्स. हम स्मोकर्स को भी ओवर टाइम फॉलो करेंगे, उनका बिहेवियर, उनका सब कुछ, एंड हम कंपैरिजन ग्रुप जो है उनको भी फॉलोज ओवर टाइम करेंगे. ठीक है, उसके बाद व्हाट वी सी कि जो हमारे स्मोकर्स हैं उनके अंदर भी वो डिजीज प्रेजेंट होने लग जाती है. ठीक है, जबकि जो हमारे कंपैरिजन ग्रुप है नॉन स्मोकर्स हैं, जो कि रीजन कैन बी एनी के मतलब ड्यू टू पैसिव स्मोकिंग और व्हाटएवर, वो भी किसी तरीके से वो डिजीज को डेवलप करने लग जाते हैं. हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट है और जो हमारा कंपैरिजन ग्रुप है उन दोनों को कंपेयर करते हैं एंड देन वी राइट अ कोहॉर्ट स्टडी. Okay, so now let's look at an example for cohort studies. So one thing that you should keep in mind is the fact that cohort studies में हम basically देख क्या रहे होते हैं कि हम cause से लेके effects पे जा रहे होते हैं, like हम exposure से outcome पे जा रहे होते हैं. We are moving forward. ठीक है, usually they are prospective, they are not retrospective. Usually, ठीक है, usually retrospective studies जो होती हैं they are case control studies. ठीक है, तो इसमें हमने पहले keep in mind that we are proceeding from the cause to the effects. ठीक है, we are proceeding from the exposure to the outcomes. ठीक है, so this is a cohort study. इनका title क्या है? Association between delayed cesarean section and severe maternal and adverse newborn outcomes. So इसमें cause क्या है? Delayed cesarean section. ठीक है, and outcome क्या है? Maternal and adverse newborn outcomes. ठीक है, so I hope that makes sense. Basically उन्होंने पहले identify किया है कि किन लोगों में. Let's read at their method. Let's look at their methods. Women were followed from the time of decision to perform cesarean section until discharge from the hospital between 15th April 2019 and 30th March 2020. ठीक है, so they looked at women who
experienced a delay in cesarean section, ठीक है, and then उनको further follow up किया था, and then they collected information. एक तो पहले उन्होंने barriers भी check कर लिए कि क्यों हो रहा है delay, and then they also looked at maternal and newborn outcomes, adverse maternal and newborn outcomes हो रहे होते हैं, ठीक है। ये केस कंट्रोल स्टडी किस तरह से होती है, अगर तो वो आउटकम्स देख रहे होते हैं, ठीक है, फिर बेसिकली उन्होंने अपना जो है हॉस्पिटल का डेटा निकाल लिया, उसमें देख लिया कि किन लोगों में मैटरनल और न्यूबॉर्न एडवर्स मैटरनल और न्यूबॉर्न आउटकम्स आ रहे थे, ठीक है, और फिर दे लुक बैक इन टाइम कि इन लोगों में से कितनों ने डिले एक्सपीरियंस किया था इन सिजेरियन सेक्शंस, ठीक है। सो दैट वुड हैव बिकम ए केस कंट्रोल स्टडी, ठीक है। आई होप दैट मेक्स सेंस। इन सिंपल वर्ड्स, कोहॉर्ट स्टडीज आर यूजुअली, अगेन आई एम सेइंग यूजुअली दे आर अहेड इन टाइम, ठीक है, and case control studies are back in time, they are retrospective. So that is it for cohort studies. And let's look at the case control study example as well. Abhi dekh lete hain. So this is an example of a case control study of aspirin use and risk of pancreatic cancer, ठीक है। So basically इन्होंने इसमें क्या किया है कि they are looking at the outcome and then they are going back and looking at the intervention, ठीक है, या the exposure. So basically इन्होंने क्या किया है, इनके methods में क्या है, we used data from a population-based Connecticut study conducted from January 2005 to August 2009 of pancreas cancer cases. They looked at pancreatic cancer specifically. They looked at people who had pancreatic cancer, and then उसका फिर उन्होंने data collect किया कि इन्होंने aspirin use किया था या नहीं किया था, ठीक है। So again, case control में आपने पहले देखना है, you look at the outcome first and then you see whether or not there is a positive association or a correlation between your outcome and the exposure. The exposure in this case is aspirin, ठीक है। I hope this makes sense. We can go over it again if someone did not understand it, but ये इतना ही है। No, you can continue. So we have covered our major portion जिसमें हमने types of research वगैरह और topic selection पढ़ लिया. Now moving towards the sources, the most primary and important like जो सबसे ज़्यादा help करता है आपको वो है medical research library. This is mainly for the systematic review and meta analysis. इस channel का content जो है वो बहुत ज़्यादा effective है और understandable है. And the second one is Cochrane library. Third one is APPNA by Dr. Sadiq Naveed. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड यू कैन यूज इट इन फ्यूचर। जो डॉक्टर सादिक नवीद है उनके प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन सेशन होते हैं इन विच ही टीचेस यू, उसमें आपको सिखाते हैं कि आप लोग कैसे सिस्टमैटिक रिव्यू करें, मेटा एनालिसिस करें। एंड द फोर्थ वन इज कोर्सेरा पे जिलियन नंबर ऑफ courses are available for systematic review, meta analysis, review articles or what not. अच्छा, उसके अलावा जो है जॉन हॉपकिंस में भी काफ़ी ज़्यादा सिस्टमेटिक रिव्यू पर फोकस हो रहा है। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ के भी कोर्सेज अवेलेबल है जॉन हॉपकिंस के, एंड सेम गोज फॉर द हार्वर्ड कॉलेज। एंड द फिफ्थ थिंग इज वी कैन लुक फॉर सीनियर्स एंड मेंटर्स जो कि हमें सिखा सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स CHSR FMH जिन्होंने आज के सेशन भी कंडक्ट करवाया है। आई होप सो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। So coming towards the benefit, here we go. अच्छा, so benefits के लिए I don't think so बताने की ज़रूरत है क्योंकि आजकल के ज़माने में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है in the field of research और every other student is writing research paper. If you does any of you have joined LinkedIn or Twitter? ठीक है, काफी लोग हैं जिन्होंने किया हुआ है ज्वाइन, लेकिन अगर आप में से कोई ट्विटर पे है, लिंक्डइन पे है, तो आप लोग देखते होंगे किस तरह एवरी अदर डे अ रिसर्च पेपर इज बीइंग पब्लिश्ड, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस में बेसिकली आते हैं कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करता है, एनालिटिकल स्किल्स को एनहांस करता है, या आपकी रिज्यूम को और करियर प्रिपरेशन, जैसे कि आपने अगर किसी ने यहाँ पे काफ़ी ने USMLE करना होगा, प्लैप करना होगा और मे बी AMC ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पर जाना होगा, तो ये आपकी रिज्यूम को और आपकी करियर प्रेप में हेल्प करता है। उसके अलावा जो है ये आपका फैकल्टी मेंटोर्स और पीयर्स वगैरह के साथ काफ़ी अच्छा आपका रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। जैसे आप जिस भी फील्ड में कर रहे हैं, आपकी उस फील्ड में थोड़ी बहुत
बन जाती है उस फील्ड के जो भी मेंटोर्स हैं या जो भी आपके पीयर्स हैं उस इंस्टीट्यूट में। इसी तरह आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है। उसके अलावा आप एक नेटवर्क जनरेट कर लेते हैं अपने कैंपस के अंदर, जिसमें आप क्लियरली कोई भी रिसर्च जब भी आपके जहन में कोई आइडिया है आप उस पर लिख सकते हैं। उसके अलावा आपके जो चांस ऑफ गेटिंग एक्सेप्टेड है, जैसे कि रेजिडेंसी मिलती है फ्लैट में, यूएसएमएलई में, तो उनमें भी जो इंटरव्यू होते हैं वो आपसे आपके मार्क्स होते हैं स्पेशल, जो कि आपसे पूछते हैं कि आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है अभी तक या नहीं किया है। अच्छा, उसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें मेक श्योर करनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी रिसर्च। दिस इज द रिसर्च गेट। आपकी वेबसाइट, इसकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको भेज दूंगी अगर किसी को नहीं पता। ये बेसिकली एक नेटवर्किंग साइट है। यहाँ पे जितने भी न्यू रिसर्चर्स हैं या जितने भी ओल्ड रिसर्चर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप उनका वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपको उनका आंसर कर देंगे। इसके अलावा आप अपनी रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं, और आप जो सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइमरी चीज़ है, आपको आपके कोलेबरेटर्स मिल सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो ORCID जो है, it basically stands for Open Researchers and Contributor Identifier. So basically this is the ID जो आपको सबसे पहले बना लेनी चाहिए if you are new in the field of research. ये क्या करती है, it makes it easy for others including potential collaborators, जो भी funders होते हैं, publishers होते हैं, कोई भी जो conference organizers होते हैं, वो आपको easily इस वजह से find कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोवाइड्स अ मींस टू डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम अदर ऑथर्स विद आइडेंटिकल और सिमिलर नेम्स। अगर किसी के नेम सेम है तो आप ये ORCID आईडी से आप लोग डिस्टिंग्विश हो सकते हैं। इसके अलावा इट लिंक्स टुगेदर योर बॉडी ऑफ वर्क, स्पेशली इफ यू हैव हैड और यूज्ड डिफरेंट नेम्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर करियर। ठीक है, उसके अलावा इट मेक्स इट इजी फॉर अदर्स इंक्लूडिंग अगेन वही पोटेंशियल कोलैबोरेटर्स, जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर है, इसे आपको वो लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा it ensures that your work is clearly attributed to you। तो जो सबसे प्राइमरी चीज इसमें ये है कि आपका कोई भी जो आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किया, कोई भी वो स्टील नहीं कर सकता। उसको स्टील करके ये नहीं कह सकता कि ये मैंने लिखा था या सेम ऐसे, मतलब कॉपी पेस्ट वगैरह नहीं हो सकता। इसमें जो आपका काम है वो आपका ही रहता है। ठीक है, सो अदर नेटवर्किंग साइट्स आर, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया, ट्विटर है, लिंक्डइन है। उसके अलावा आप लोग सोशल मीडिया चेक कर सकते हैं। CHSR का यूट्यूब चैनल है। सोशल मीडिया बेसिकली आप उन कॉलेजेस का, डिफरेंट कॉलेजेस हैं, उनकी सोसाइटीज़ हैं जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स रन करते हैं, और उनमें रिसर्च के बारे में वो लोग वेबिनार्स वगैरह या पूरी एक सीरीज रोड मैप टू रिसर्च वगैरह डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके अलावा CHSR के यूट्यूब चैनल में भी बताया गया हुआ है रिसर्च रिलेटेड। उसमें आपको बताया गया कि हाउ टू यूज सोशल मीडिया टू बेसिकली राइट अ रिसर्च पेपर। So coming towards the end of our today's webinar, this is the quotation of Albert Einstein. ये आप लोग पढ़ लें एक दफा खुद ही। Thank you, Noor. The session was very well conducted, very comprehensive presentation. I would like to point out that Noor made this presentation herself, and she managed to cover all of the aspects of the types of research, the importance of research, the types of research that you can conduct. Again, we did not touch on editorials. They are the easiest publication to write, but we have a session on editorials on Sunday, so be sure to attend that session as well, and that is with an expert, Dr. Maryam Tarikawana. And I would like to point out the importance of networking sites. You get a lot of opportunities to work on research projects if you're sharing your previous projects on Twitter, on LinkedIn especially. LinkedIn पे बहुत सारी opportunities होती हैं. So make sure that you make a LinkedIn account. Make sure that it is professional. And again, for Twitter as well, make sure that your Twitter account is very professional. If you have an account already, scratch that. Like you can have that account, लेकिन आप अलग से एक professional Twitter account जरूर बनाएं, right? We had a session on social media use as well. It has been uploaded on CHSR's YouTube channel, and this session will also be uploaded on our YouTube channel. And also, ResearchGate is also very important. Sorry, no, just a second. ResearchGate is also very important because ek to ye ki you would be it's a networking site of sorts. You would get to network with researchers. You would get to find opportunities to work on research, but also it keeps a track of your research, and it keeps you updated on your citations as well. Okay, so for if someone cites your article, if someone cites your study, you will get an email that oh आपकी citation बन गई है, आपको किसी ने cite किया. So that is very important as well. I know you had something to add.
I hope you guys learned something productive today. Coming towards the end of the session, I would like to extend my thanks to the CHSR FMH for giving us a platform to learn and excel in the field of research. And last but not the least, I would like to thank Eeman, the way you handled me, like it was my first time, and you were there for me. So yes. Also, let's just address a question. So Saad asked, what differentiates systematic review from meta-analysis? So basically, there is, as the name suggests, it's systematic in nature. There is a protocol that you follow. There are certain guidelines that you adhere to. But the main difference is the fact that there is a quantitative analysis in meta-analysis and systematic review. There's no quantitative analysis as such. You are looking at a lot of literature, you are writing a narrative review, you are narrating what you find in your search, ठीक है? मेटा एनालिसिस में आप क्वांटिटेटिवली देख रहे होते हैं, you get numbers and stuff, जिस तरह से हमने आपको दिखाया था कि you get a certain number which can help you conclude whether or not there is an positive association between whatever your exposure is and whatever your outcome is, ठीक है? उसके अलावा if someone has any questions, please feel free to ask. And Abdullah also asked when we were talking about case reports. So he said, isn't a case report on multiple cases? So I pointed out, and I will also point out again, that that is a case series. So when you are reporting multiple cases on a similar disease, on a similar presentation, that becomes a case series. When you are reporting one single case, when you are reporting one single patient, that is a case report. Say it. And let me see if there are any other questions. I think that is it. We do not have any other questions. And yeah, be sure to join Sunday's session. I'm telling you guys again and again and emphasizing on it again and again because editorials are the easiest thing that you can write. So please do join us on Sunday. That session will begin at 8:30. And that is it from our side for today. Thank you so much to everyone for joining and have a good night. Allah Hafiz.